होता है, क्या कुछ सिचुएशन बनती है क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली और अल्ट्रासाउंड लेवल पे इमेजेस के जरिए, तो वो सब के बारे में जो डायग्नोसिस बनाते हैं और फिर उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तैयार करते हैं। ऑफ कोर्स आयुर्वेदिक सिस्टम से हमारे आज के अतिथि वक्ता अपना पूरा प्रकाश डालेंगे। तो आज की इस टॉपिक पर अपने अतिथि वक्ता का बहुत ज्यादा हम अभिनंदन करते हुए प्रोफेसर कामिनी धीमान जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके कोऑर्डिनेशन में, उनके उनके सौजन्य से, उनके समन्वय से ये सीरीज बहुत ही अच्छे सफलतापूर्वक चल रही है। और निश्चित रूप से हर बार हर वेबिनार पर वो एक अपनी बहुत ही अच्छी अतिथि वक्ता को देते हैं और उनका कथन है कि ये बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड, केसेस ओरिएंटेड और एक्सपीरियंस ओरिएंटेड अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और ये सच्चाई है। वो हीरा बताती हैं, जेम बताती हैं, उनका बहुत बहुत आभार है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम समय की मर्यादा को देखते हुए आदरणीय प्रोफेसर पवन शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि आज के अतिथि वक्ता को आमंत्रित करने की बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आपने बिल्कुल सही कहा सर। कामिनी जी, बस 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 आ गए आ गए, जिनका स्वागत करना चाहते हैं। मैडम कामिनी जी का बहुत बहुत स्वागत है। उनकी प्रेरणा से आज के हमारी अतिथि वक्ता डॉक्टर बलजोत कौर जी हैं, वो समय से ही उपस्थित है। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है और आपके सभी श्रोतागण, सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर कामिनी धीमान जी कुछ दो शब्द शुरुआत में कहना चाहेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत। मैं आदरणीय डॉक्टर कामिनी धीमान जी को सादर आमंत्रित करता हूँ उनके विचारों के लिए। डॉक्टर कामिनी मैडम, कहीं उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। कामिनी मैडम क्या? मैं ये इंतजार, हम लोग शांति से वो आएंगी तब उनको विचार लेंगे। मैं डॉक्टर बलजोत कौर जी, प्रोफेसर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग, शहीद करतार सिंह आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना से मैडम बलजोत कौर जी को सादर आमंत्रित करता हूं उनके विचारों के लिए। ओवेरियन सिस्ट आयुर्वेदिक मैनेजमेंट। थैंक यू एंड वेलकम डॉक्टर बलजोत जी अगेन। जस्ट a sec। उनकी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है मैडम की। कामिनी मैडम जी जुड़ी हैं क्या? जी नमस्कार। स्वागतम। नमस्कार, बहुत बार बुला रहे हैं, बार बार इनवाइट कर रहे हैं जी। नहीं, मुझे ऐड ही नहीं हो कर रहे थे, पता नहीं, मैंने कहा ज्वाइन नहीं हो पा रही, मैं बार बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी। चलिए आप आ गए, नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप शुरुआत करवा दीजिए, फिर मैडम बलजोत जी अपने प्रवचन देना शुरू करेंगे। वो स्टार्टिंग हो गई? नहीं, बस आपका इंतजार था। ऑडियंस इस पे आप थोड़ा दो लाइन शुरू कर दीजिए। अच्छा ठीक है। वो आरती हो गई ना? हाँ हो गई। हमारी इससे पहले वाली वेबिनार हुई है अभी 6:30 से 7:30। हाँ जी, ठीक जो है। कल छूट गई थी वो आज कर ली हमने। ओके ठीक है। तो भी हम अभी मैं आज इनको तो मैडम इनवाइट करती हूँ ना, बलजोत डॉक्टर जी। बलजीत कौर जी के, हम आपके कॉलेज से बाहर से निकले, अभी हम जालंधर, अमृतसर, पंजाब होते हुए अभी सोलन पहुंच गए यहाँ पर कसौली में। अच्छा। बच्चे लोग आए हुए थे। हाँ ठीक आप है। विषय तो प्रवेश करा दीजिए, फिर मैडम अपना जी presentation मैं शुरुआत करा देती हूँ। रिस्पेक्टेड पवन सर, अग्निहोत्री जी, our today speaker Dr. Baljot, and all the participants. Today we are discussing ovarian cyst, एक कॉमन रिपोर्ट। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कई बार विदाउट एनी सिम्टम्स, समटाइम्स पेशेंट्स आर हैविंग report of ovarian cyst, and in lot many cases nowadays ovarian cyst is very common. तो हमने जो ग्रोथ डिसऑर्डर वी वर डिस्कसिंग दिस मंथ, उसमें हमने अगला टॉपिक जो लिया है दैट इज ओवेरियन सिस्ट।
एंड बलजोत कौर जो है वो बहुत ही, मैं बोलती हूँ, रिनॉन नाम है, जो इस शी इज अ वेरी गुड ओरेटर। तो पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा कि उनके व्यूज सुनना, उनके ओपिनियन सुनना, उनके आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑन ओवेरियन सिस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट. So we will listen Baljot Kaur, and then we will take up the questions. Over to you, Dr. Baljot. You can share your screen. Okay. Yeah. नमस्कार सभी को। भगवान धन्वंतरी के आगे नमन करते हुए डॉक्टर पवन सर, डॉक्टर अग्निहोत्री सर, डॉक्टर कामिनी मैम और आज के सभी पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच आप सबका और स्पेशली मैम का कि मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने में ये व्यूज रख पाऊँ ओवेरियन सिस्ट्स पे। थैंक यू मैम। तो इसको हम बीजाशय ग्रंथि भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम मॉडर्न का ले लेंगे इसमें कि व्हाट आर ओवेरियन सिस्ट्स। द ओवरी इज अ कॉमन साइट फॉर सिस्ट्स which may be simple enlargements of normal ovarian constituents, the Graafian follicle or corpus luteum, or they may arise from abnormal growth of ovarian epithelium. Now, etiology. The etiology of ovarian cysts or adnexal masses ranges from physiologically normal, that is follicular or luteal cysts, to ovarian malignancy. Ovarian cysts can occur at any age, but are more common in reproductive years and increase in menarchal females due to endogenous hormone production. Now, simple cysts are most likely to occur in all age groups. Mixed cystic and solid and completely solid ovarian lesions have a higher rate of malignancy than simple cysts. Although most ovarian cysts are benign, age is the most important independent risk factor, and postmenopausal women with any type of cyst should have proper follow-up and treatment due to a higher risk for malignancy. So postmenopausal women, any cyst, any symptom, we have to take it very seriously. Now, types of cysts, mainly functional cysts and neoplastic cysts. Now, simple cysts are mainly follicular and corpus luteal cysts, theca lutein cysts, hemorrhagic cysts, polycystic ovarian syndrome, and fetal ovarian cysts. And neoplastic cysts may mainly dermoids, that is mature cystic teratomas, endometrioma, and ovarian malignancy. Now, what is follicular cyst? Follicular cysts arise when follicles fail to rupture during ovulation and can appear as smooth, thin-walled, and unilocular. In the follicular phase, follicular cysts may form because a lack of physiological release of the ovum due to excessive FSH stimulation or the absence of the usual LH surge at mid-cycle just before ovulation. These cysts continue to grow because of hormonal stimulation. Follicular cysts are usually larger than 2.5 centimeter in diameter. Now, corpus luteal cysts, they can appear as complex or simple, thick-walled, or contain internal debris. Corpus luteum cysts are always present during pregnancy and usually resolve by the end of the first trimester. Now, without pregnancy, the lifespan of corpus luteum is 14 days. If the egg is fertilized, the corpus luteum continues to secrete progesterone until its dissolution at 14 weeks, when the cysts undergo central hemorrhage. If the dissolution of the corpus luteum does not occur, it may result in a corpus luteal cyst, which usually grows to 3 centimeter. Now, both follicular and corpus luteal cysts can turn into hemorrhagic cysts. They are generally asymptomatic and spontaneously resolve without treatment. Then theca lutein cysts. Theca lutein cysts are luteinized follicle cysts that form as a result of overstimulation in elevated human chorionic gonadotrophin levels. They can occur in pregnant women,
women with gestational trophoblastic disease, multiple gestation, and ovarian hyperstimulation. Then hemorrhagic cysts, the granulosa layer of the ovary remains avascular until the time of ovulation. After ovulation occurs, the granulosa layer quickly becomes vascularized by thin-walled vessels which rupture easily, giving rise to a hemorrhagic cyst. These are commonly seen in clinical practice because hemorrhage into a cyst is usually painful. They can present with variable clinical symptoms and signs ranging from no symptoms up to acute abdomen. Now, hemorrhagic ovarian cysts are commonly detected by grayscale ultrasound, but they are often misdiagnosed due to their variable sonographic appearance, mimicking other organic adnexal masses. Most of the hemorrhagic cysts are functional. Few of them can be neoplastic, but they are universally benign. So, I have taken a few ultrasound pics from this article and various presentations of the hemorrhagic cyst. So, internal echogram shows diffused solid pattern. This is the ovary, and here it is showing the diffused solid pattern. Then this is showing mixed cystic and solid pattern. Okay, this is cystic and solid pattern. Then a sponge-like pattern, this one. So these are the variable presentations. And color Doppler of hemorrhagic cyst shows peripheral flow of blood in the wall with color score 2. This one. Okay. These pictures, whenever a patient comes with an ultrasound, we have to see the picture also. We do not have to follow blindly what is written in the report. We have to check the USG pics also. So you can see that this is so much of variation, and you can get confused whether it is hemorrhagic or it is neoplastic. So this we have to take care of. Now, polycystic ovary syndrome, this we all know. Polycystic ovary or ovarian syndrome is a set of symptoms related to an imbalance of hormones that can affect women and girls of reproductive age. It is defined and diagnosed by a combination of signs and symptoms of androgen excess, ovarian dysfunction, and polycystic ovarian morphology on ultrasound. So any two of these criteria should be present, then we can consider it as polycystic ovary. Now, defining PCOS through years. So to better understand what PCOS is, it is important to know how PCOS is defined and categorized. Although it is called polycystic ovary or ovarian syndrome, PCOS is not primarily defined by ovarian cysts. Rather, PCOS is defined by the presence of at least 2 of the 3 diagnostic criteria. These diagnostic criteria have been defined 3 separate times by the National Institutes of Health in 1990, by the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) and the American Society for Reproductive Medicine in 2003, also known as the Rotterdam's criteria, which is followed nowadays, and by the Androgen Excess and PCOS Society in 2006. In 2012, NIH endorsed the 2003 Rotterdam criteria for PCOS. Now see the various definitions. Now hyperandrogenism, it is considered by all the societies. Ovarian dysfunction is also considered, and polycystic ovarian morphology. Then that is this has come later on in 2003. Then exclusion of conditions that mimic PCOS. So in NIH 90, there were 2 criteria, so 2 of them should be there, and in rest of the 3, 2 should be present. Now here I would like to add regarding PCOS that one is PCOM, that is polycystic ovarian morphology.
Okay, so when we see these teenage girls or the girls where puberty has started, menarche has occurred, there are irregularities in the menstrual cycle, and when we then go for the ultrasound, the picture shows PCOD. Okay, so that is not PCOD, that is polycystic ovarian morphology, and the definition is a girl when she starts her first period, and till 8 years we cannot consider it as PCOD. And during in 8 years, if this condition persists or continues, then we can, and these are the criteria, they are also present, then we will call it as PCOD or PCOS. So during these young girls, medicine is not required much, mainly lifestyle modifications, they help a lot, and menstrual cycle and other features, they become normal. So specific disorders with signs and symptoms that overlap with those of PCOS must be ruled out for an accurate PCOS diagnosis. These include hyperprolactinemia, non-classic congenital adrenal hyperplasia, and Cushing's syndrome. Because of the diagnostic challenges involved with PCOS, primary care providers might recommend seeing a gynecologist, which is a doctor who specializes. Okay, so whenever we have to differentiate from these conditions also, which mimic the condition like PCOS. So this is the ultrasound image of this is the normal ovary, and this is the PCOS ovary. And there is pearl-like pearl string appearance because they appear in the peripheral part of the ovary. Now then, fetal ovarian cysts. These are caused by hormonal stimulation. Also, an association between fetal ovarian cysts and maternal diabetes and fetal hypothyroidism has been found. Most fetal ovarian cysts are usually small and involate during the first few months of life and are of no significance. These cysts are diagnosed in the third trimester of pregnancy, and most tend to resolve at 2 to 10 weeks postnatally. So there's nothing serious about it. This is normal. Then coming to neoplastic cysts, these cysts arise from the inappropriate overgrowth of cells within the ovary and may be malignant or benign. They may arise from the surface epithelium, and the benign lesions include serous and mucinous tumors. Other cystic lesions can include stromal or germ cell elements. So stromal masses are more often solid, and germ cell tumors are more often complex. So this is the difference. Now, studies suggest that some seemingly ovarian serous carcinomas actually originate in the fallopian tubes and then spread to the ovary. These tubal lesions have also been found to spread to the peritoneum, leading to an apparent peritoneal carcinoma. Germ cell and stromal tumors do arise from ovary itself. Then neoplasm, first is the dermoids or mature cystic teratomas. Dermoid cysts contain elements from all three differentiated germ cells, that is ectodermal, mesodermal, and endodermal, and appear complex but can have a variety of appearances due to the tissue they contain. So they contain mature tissue of ectodermal, that is skin, hair, mesodermal, muscle or urinary parts, and endodermal, that is gastrointestinal or lung origin. Now this is a dermoid cyst. So it is a unilocular cyst measuring 7 into 7 into 3 centimeter. Cyst is filled with sebaceous and keratin material, which is gray, white in color, and admixed with masses of hair. Now, dermoid cysts are almost always benign, but have the potential to rupture, spilling sebum, or torsion. They can undergo a malignant transformation in 1 to 2% of cases. Then endometrioma or chocolate cyst.
Endometriomas, common in endometriosis, arise from ectopic growth of endometrial tissue and are often referred to as chocolate cysts because they contain dark, thick, gelatinous, aged blood products. They appear as a complex mass on ultrasound and are described as having ground glass internal echoes. Although the overall risk of malignant transformation is low, endometriomas increase this risk in women with endometriosis. Now, an endometrioma contains free iron, reactive oxygen species, proteolytic enzymes, and inflammatory molecules in concentrations from tens to hundreds of times higher than those present in the peripheral blood or in any other type of benign cyst. So, the endometrioma, it can be classified into two types, type 1 and type 2. Type 1 consists of small primary endometriomas that develop from surface endometrial implants. Type 2 arises from functional cysts that have been invaded by ovarian endometriosis or type 1 endometriomas. Okay, so type 2 cyst is already there and it has been invaded. And type 1, it has developed from surface endometrial implants. Now, the physical barrier between the cyst contents and the normal ovarian tissue is a thin wall composed of ovarian cortex itself or fibroreactive tissue. Now, reactive oxygen species potentially permeating the surrounding tissues and proteolytic substances degrading the adjacent areas are likely to cause the substitution of normal ovarian cortical tissue with fibrous tissue in which the cortex-specific stroma is reduced. So the fibrosis is associated with smooth muscle metaplasia and followed by follicular loss and intra-ovarian vascular injury. So this is an ultrasound image of the left head and exit reveals a mass within the left ovary with diffuse low-level internal echoes with small bright foci near the wall of the mass. Endometrioma looks like this. Then this is the ultrasound picture of this is the ground glass appearance in on ultrasound and on laparoscopy. This is the chocolate cyst or endometrioma. Now, this is very important. Ultrasonographic features for diagnosis. How to make diagnosis? So the diagnostic accuracy of an ultrasound scan can be more difficult in premenopausal women due to cyclic changes caused by ovulation. Several features are to be taken into consideration by describing the sonographic features of head and neck cell tumors. So you can correlate that what diagnoses are written or what the features of the cyst are written in the USG report. Most studies find that unilocular anechoic cysts less than 5 centimeters in diameter are seldom malignant, even in post-menopausal women. Only 6% of cysts with a diameter of 3 to 5 centimeters were malignant in a cohort of post-menopausal women, whereas others found no malignancies in cysts with a diameter less than 5 centimeters. Then multilocular cysts are more often malignant than unilocular cysts. Granberg found that 8% of multilocular cysts were malignant compared to only 0.3% of unilocular cysts in a mixed population of pre- and post-menopausal women. The echogenicity of the cyst content cannot discriminate between benign or malignant cysts. Neither can the thickness of the cyst wall or the presence of septae. So this we have to take care of. Okay, so echogenicity, we cannot consider it or understand that it can be only benign or only malignant. Then solid parts, semi-solid, mixed tumors are often related to malignancy. In premenopausal women, cysts with solid parts and semi-solid and mixed tumors are found to be malignant in around 2 to 17% of cases. However, in postmenopausal women, these appearances are highly related to malignancy, as 66.2% of cysts with cystic solid parts and 74% of solid tumors were malignant.
Now, papillary formations are correlated to malignancy, and the risk of malignancy increased from 1.6 to 10% if a unilocular cyst contained solid parts or papillary formations. Okay, so unilocular cyst can be benign, but unilocular cyst having these presentation with or solid parts or papillary formations, it can be malignant. However, the presence of papillary formations on its own cannot be used to differentiate between benign and malignant cases. So bilateral abnormal adnexal masses on an ultrasound scan increase the risk of malignancy 2.8-fold in a mixed population of pre- and post-menopausal women. Now, the diameter of the cyst is positively correlated to the risk of malignancy. No borderline or malignant diagnoses were made in unilocular cysts measuring 75 mm, like up to 7.5 centimeter cyst. Unilocular cysts were benign, whereas cysts with a complex ultrasound structure were malignant in 7.2% of the cases if the diameter was more than 79 mm or around 8 centimeter. A free fluid in the pouch of Douglas was found in 40% of malignant cases and in 5% of benign cases in postmenopausal women. In premenopausal women, the figures were 48% compared to around 12%. The presence of ascites or free fluid may thus increase the likelihood of malignancy 4-fold in premenopausal women and 8-fold in postmenopausal women. This is an indication for operation, though increased fluid in the pouch of Douglas can be seen in association with benign cyst. Now, the features that shall be noted in ultrasound scanning are summarized. Now, the features of an ovarian cyst. So these are the points which are mentioned in a ultrasound report. Number of locules, presence of solid parts, that is septum or solid papillary proliferations. This is we find often in the report of endometriomas. The diameter of the cyst or tumor, presence of cysts, tumors in the contralateral ovary, and fluid in the pouch of Douglas. Then use of these structures to discriminate between non-suspicious and suspicious ovarian cyst is summarized. Now, difference between non-suspicious and suspicious ovarian cyst. In non-suspicious ovarian cyst, unilocular cysts without solid parts or papillary proliferations. And the suspicious ovarian cyst, at least 2 locules, mixed cystic solid or solid, more than 80% solid, and bilateral tumor. Then comes to CA125. Now, using 35 units as the upper limit of normal range, the sensitivity and false positive rate of a CA125 value are 50 to 83%, and false positive rate is 14 to 36% respectively. Now, false negative marker values are common among women with stage 1 ovarian cancer, that is sensitivity is 50%. False positive CA125 values are often found in women with endometriosis, infections, and effusions. So we should not rely on only one CA125 report. It should be repeated. Now, this is now risk of malignancy index. Now, the risk of malignancy index in ovarian tumors is a validated clinical tool used for risk stratification of ovarian lesions to guide further management. In general, in our clinical practice, we usually don't use this because this is used for confirming the status of the carcinoma. Now, the RMI is a simple scoring system based on menopausal status, that is M, ultrasonographic morphology, that is U, and serums CA125. So ultrasound score 0 if there are no features of malignancy on ultrasound. 1 is given when one feature of malignancy on ultrasound. 3 is given 2 or more features of malignancy on ultrasound. Then features of malignancy on ultrasound include irregular solid or multiloculated cystic mass, solid components on cyst wall, high Doppler flow in solid components. This is very significant, high Doppler flow.
ascites, peritoneal nodules, or other evidence of metastasis. Then M score, 1 is given for premenopausal stage and 3 is given for postmenopausal, that is no period for more than 1 year, or a woman over 50 years with a hysterectomy. So this is the formula. This is how it is calculated. Serum CA 125 is applied directly into the equation. So RMI is M into U into CA 125. So interpretation. Now RMI score of more than 200, it is high risk with referral to specialist gynecological cancer service and staging CT advised. RMI score of 25 to 200, intermediate risk with MRI recommended to further evaluate the lesion. And RMI score less than 25, low risk with repeat clinical assessment advised with MRI if ultrasound features are borderline. Now, what are the clinical manifestations? Now, most patients with ovarian cysts are asymptomatic, with the cysts being discovered incidentally during ultrasonography or routine pelvic examination. Some cysts, however, may be associated with a range of symptoms, sometimes severe, including the following: mainly lower abdominal or pelvic pain, irregular menstrual periods, lower abdominal pain during menstrual period, pelvic pressure or fullness, pelvic pain after strenuous exercise or sexual intercourse, pain or pressure with urination or bowel movements, and nausea and vomiting and vaginal pain. Any of these clinical manifestations can occur, or can be no symptoms, and we can find it incidentally also, the ovarian cysts. So the differential diagnosis, broadly classified into two subcategories, gynecological and non-gynecological. So in gynecological, there are benign, malignant, pelvic inflammatory disease, and ectopic pregnancy. So in benign, functional cyst, endometrioma, tubo-ovarian abscess, mature teratoma, serous cystadenoma, mucinous cystadenoma, paratubal cyst, hydrosalpinx, and leiomyomas. And in malignant, epithelial carcinoma, germ cell tumor, sex cord or stromal tumor, metastatic cancer. So we have to differentiate from all these. Then non-gynecological, appendicitis, diverticulitis, pelvic kidney, gastrointestinal cancer, UTI, nephrolithiasis, and psoas abscess. So because they are all in the pelvic region, so we have to differentiate it. The lower abdomen. Now coming to complications, there are three classic complications of ovarian cysts that commonly present to the emergency department: rupture, hemorrhage, and torsion. The fifth most common gynecological emergency is ovarian torsion, defined as the complete or partial twisting of the ovarian vessels, resulting in obstruction of blood flow to the ovary. The diagnosis is made clinically with the assistance of a history and physical examination, blood work, and imaging, and is confirmed by diagnostic laparoscopy. And if torsion occurs, it is an emergency. Otherwise, patient can land in shock, or there can be damage to the ovary. Now coming to treatment, there are several different treatment options available, but ultimately management depends on the patient's age, menopausal status, the size of the cyst, and whether the cyst has characteristics suspicious of malignancy. So unilocular cysts less than 10 centimeter are usually benign regardless of patient age. Therefore, if the patient is asymptomatic, she can be monitored conservatively with serial transvaginal ultrasound, since the majority of cysts resolve spontaneously without intervention. These are the functional cysts. If a cyst does not resolve after several menstrual cycles, it is unlikely to be a functional cyst, and further workup is indicated. Now, surgical indications include suspected ovarian torsion, persistent adnexal mass, acute abdominal pain, and suspected malignancy.
Now, surgery in premenopausal women prioritizes fertility preservation, and every attempt is made to remove minimal ovarian tissue. So I hope whenever you get an ultrasound report, you will study it a bit deeply and you can understand it in a better way and how to manage the patient. Now, coming to Ayurvedic aspect, we can consider it as a Bijashaya Granthi. Though Granthi is explained in detail, but that Bijashaya, it is not mentioned in detail, and this part is not at all explained in the Ayurvedic text. So it's just our understanding and from our principles how we can manage these cysts. The main causative factor for three rogas is Vata dosh, and it is also mentioned in Ras Dhatu Pradoshaj Vikar. So we know the Ras Dhatu Updhatu kya hai? Stanya or Artav. So Artav, it can be considered as endometrium, and it is also considered as hormones or the ovarian, the follicles. Now, Acharya Charak has told that every disease can't be named, so Vaidyas should know the disease condition according to the involvement of the doshas, dhatus, and srotas, etc. So here, while treating these ovarian cysts, we will consider the Ayurvedic principles. Now, cyst in Ayurveda can be correlated with Granthi. Besides specific disease, the word Granthi has also been used in Sushruta Samhita, Madhav Nidan, Bhav Prakash, and Yog Ratnakar. Now, Acharya Chakrapani says that disease has been named Granthi to denote the specific character, that is glandular or nodular swelling. The disease Granthi can be equated with all types of small glandular or nodular swellings developing mostly due to benign tumors, that is neoplasm or cysts. Now, Granthi is defined as Vritonatam, Vigrathitam, tu shofam, kurvantayato, Granthirti pradishtaha by Acharya Sushrut, which means a swelling which is spherical in shape, raised from skin surface and resembles a knot. So we have to just take few points, or we just have to understand whatever the acharyas have said to understand ovarian cysts. Now, in Ayurveda, ovarian cyst may be correlated with Kafaj Granthi. The lakshanas of Kafaj Granthi are Vedna Rahit, Ghan, Sheet, Savan, or Kandokta. So we that this lakshan is not there, Kandu, feeling of Kandu. So these are the types of Granthi according to different acharyas: Vataj, Pittaj, Kafaj, Medod, Siraj, Raktaj, and Mansaj, and two more. And mainly we can correlate it with Kafaj Granthi, but the PCOS and the endometriomas, we cannot exactly correlate with any of these. What definition that is given in the Samhitas. So just for our understanding, Kafaj Granthi, it is slightly discolored and cold to touch, characterized by slight pain and itching. It is having hard consistency as of stone. The growth is slow and sturdy. On opening, there is a thick white colored discharge. These features are seen in sebaceous cyst or dermoid cyst. So this is the general detailing. Then the hemorrhagic cyst, though we cannot exactly consider it as Pittaj Granthi, but there are changes, the vascularity happens. So their Rakt and Pit aspect is there. So Pittaj Granthi is characterized by excessive heat and burning sensation, pain like that of being burned by fire. Granthi is yellowish red in color,
On opening, there is discharge of blood, which is hot. These features are seen in infected cysts. So though hemorrhagic cyst is not infected, but we can consider these doshas in the hemorrhagic cyst. Now, Nidan. So here we will consider the Nidan aspect in the females. So mithya acharein tastrinam pradushten artaven cha jayante beach doshat cha devat cha shrunu ta prithak. So mithya acharein is asamyak ahar and achar. And beach doshat it is artavgat beach dushti. And few of the cysts, they have genetic origin also, that we can also consider. Then this is we can discuss in detail mithya acharan. Then vinchiti vyapado yonar jayante dusht bhojanat vishamast ang shayan bhrish methun sevanya dusht artavat apdravya bij doshen devataha. So here dusht bhojan and ahar, that we all know, whatever food we are taking nowadays, it is we can consider it as dushivish, or the dioxins we are inhaling, ingesting more. So they are leading to xenoestrogen effect and the excess of estradiol in the body. Then Visham Angshayan, that is the abnormal posture of the body, or here we can consider the working females, those who have to sit continuously during their work. So that leads to pelvic congestion. Then coitus, which has not been taken care of, that leads to intake of hormonal pills like eye pills. They are used very easily, like they don't know what harmful effects it has. So that also leads to hormonal disruption. Then dushtartav, that is endometrial or menstrual disorders. Then beach dosh, abnormality during intrauterine life. So that is why the antenatal care is very significant, especially in now times. Now coming to Ayurvedic management, that is Nidan Parivarjan, Rajaswala Paricharya, Shaman Chikitsa, and Shodhan Chikitsa. So before going that, I'm sorry, there was some technical glitch, so few of my slides were lost. So I will discuss this part like without the slides. So now coming to Dusht Bhojan and Ahar, all the junk food, all the sauces, they are having all the preservatives. They have that effect of disrupting the hormonal balance. Then coming to this abnormal posture of the body, when they are sitting in a continuous in a one position, then pelvic congestion is there, and it leads to the menstrual disorders also. Then coming to coitus, frequent coitus, and the use of updravyas they have written, that also affects the fertility. Then dusht artav, here we will mainly the endometrial changes. I'll discuss further how the menstrual disorders are affecting the fertility and the general health of the female. Then beach dosh. Now coming to now why Rajaswala Paricharya is so important, it's just that we have to be very vocal about our dincharyas, our charyas. So usually it is shown in the advertisements also that menstrual period, it's normal, you just live your life. It's not like that.
what our seniors have told, that rest should be done for 3 days. That has over the period of time has become myth, but it is not myth or any taboo. It was for the preservation of the health. So it is said, Tatah Pushp Darshane Pratham Divasat Prabhriti Brahmacharini Snanadya Alankar Rahit Darbha Sanstar Shaini Triratram Asit. So जैसे ही menses start होते हैं, so for the first day she has to live like a brahmacharini. स्नान और अलंकार नहीं करना है. So कोई any type of anxiety or excitement should not be there. And when we say about the snan or the bath, she can take bath of the body or the lower part, but she should not put water on her head. And we have seen females when they say that when we take bath or head bath, on first day our menses stop or the bleeding becomes scanty. So that we have to take care of. And then Darbha Sanstar Shaini. They have said that she should sleep on the mat made of darb. So darb is it is styptic. It controls the flow of the blood, and it is also Shitvirya. So for 3 days she has to sleep on that. Then Parn Sharav Kartal Anyatame cha Yavakam Payasa Siddham Alpam Karshanartham Ashniyat. Then she has to take food ya to on that leaf plates or the clay ones or in hands. Then we have to take, what she has to take is mainly yav on payas, or the yav made in the cooked with the milk. Then alpam karshanartham ashniyat. So it causes karshan also. And tikshna ushna amna lavanani varjayat. So tikshna ushna and amla lavan, this should be avoided during these 3 days at least. Now kshayrayam yavakam stokam poshtshodhanam karshanam. So here they have given kshayrayam yavakam stokam. Stokam is when we do yagya, we put ahuti one little by little. So that is why same thing with the food she is taking yavak, it will increase the Jatharagni. Poshtshodhan and increases the Jatharagni. Now Kartal Sharafpan Bhojanim Havishyam. So this is Havishyam is although that ahuti we give on in yagya. So Havishyam sa ghrit Shalyodhanadi Kshir Sanskritam Yavannam iti eke. So Havishyam is in small quantities, ya to shali chawal or yav, that is to be cooked with ghee and milk, that is to be taken. Now Karshan helps to maintain Vaishadya of Artav and timely cessation of bleeding. Then Rajah is natural Shodhan Kal leading to Agni Mandya. So aim of Rajasvala Paricharya is to avoid vitiation of Vat and Kaph and prevent formation of Am and restore energy. And studies have also shown that ovulation period is or the ovulation process is an inflammatory process. There are inflammatory changes during ovulation. So we have to take care of that. Now, what happens during menstruation? There is regeneration of endometrium, starts even before the menstruation ceases and is completed 2 to 3 days after the end of menstruation. So when the bleeding starts, simultaneously new growth starts. So new blood vessels grow from the stumps of old one. The glands and stromal cells are regenerated from the remnants left in the basal zone. The regeneration of functional layer is attributed to a unique stem cell population and its progenitor cells confined to basalis layer. So we can see that it is all depending on the proper function of the Apanvayu. And here rest, when rest has been said to be taken,
And the food which we are giving to the Rajaswala is yav with ghee and with milk. So we need that good cough also for the development of new blood vessels and the ovum also. Now, during ovarian cycle, the following changes occur. Recruitment of groups of follicles, that is the preantral phase. Selection of dominant follicle and its maturation. This is the dominant follicle. Then ovulation, corpus luteum formation, and demise of corpus luteum. So you can see there is this cohort of follicles. It is in the first 3 days of menses. So there is accelerated growth of all components of the follicles of the preantral phase. There is production of follicular fluid, which is primarily an ultrafiltrate of blood from vessels within theca interna. So we can understand that why this Rajaswala Paricharya is so important for good endometrium and healthy ovum. So follicles, we need that kind of good rus also to maintain their proper function. And nowadays we are also seeing this ovarian cysts and PCOD plus low AMH or the ovarian failure cases also. So these, this should be suggested to the patient to follow this. If she cannot do take the yav or the shali chawal, just tell her to take normal food without salt or mainly with milk and ghee. You can give her the options, and patients do follow what we suggest them. Now coming to Shaman Chikitsa, mainly Chikitsa Sutra we have to follow. Langhan, Deepan and Pachan, this is the first step and this is very important. Then Rakta Prasadan, Dushi Vishar Chikitsa and Shofar Chikitsa to be done. Now Chikitsa Sutra is Nahi Vatadrute Yoni Narinam Sampradushyati Shamitva Tamnasya Kukurya Doshayasya Bheshajam. So, any disease of the yoni, what is the cause? So we have to take care of that. So in a female, that Apanvayu is the main, then Samanvayu and Vyanvayu. These 3 vayus we have to take care of, along with the dhatus, mainly Ras, Rakt, and Shukra Dhatu. Now, upon Vayu Vaigunya, Vimargastha hi Ayukta hi va roge swasthan karma jehe, Shariram Pidayante te prananashu haranti cha. So, Vimargastha, abnormal pathway, that is the normal is the downward movement, and that we have it is given in the Udavartini Yoni Vyapad also, that it goes upwards, and so we have to take care of that. Then Ayukta is vitiated. So these will cause gynecological disorders in this context. Then Langhan, Deepan, Pachan. So whenever the patient comes to us, first we have to take detailed history. That what is her sleeping pattern, what kind of food she's taking, how much water she's drinking, and when she's taking the water. This is very important because most of the people, they are taking 3 or 4 glasses of water in a day, and that too with food. Okay, so we have to advise them, we have to tell them to take food and take water after half an hour or so. Then there are wrong combinations also. And when with Langhan, we have to tell them to stop taking heavy foods which are heavy to digest. For example, what I tell my patients, especially in Punjab,
they usually take, now this is the winter season, saag is very, people are fond of to taking. I tell them to stop that. And because most of the people, especially females, they come with a complaint of acidity, with the indigestion, with pelvic pain or menstrual disorders. They eat saag a lot. So you have to stop that. And then the pulses, especially the urad and rajma, curd. Curd is very regularly taken, that too in the morning time. Those the things we have to tell them to stop. And then for the Deepan and Pachan, and then for one meal, they have to take moong dal, cooked moong dal, only one time, only moong dal, no roti, no rice. And that she has to continue for 10 to 15 days. And then we can add the medicines like Chitrakadi Vati, according to the patient. There are so many medicines. And then Pachan, we can give her Trifla Gugul or Avipattikar Churn. And then the physical activity is very important. Now, then coming to Chikitsa, mainly Vatkar Kafahar Chikitsa. Here, we will consider the PCOS picture and the other cysts, normal ovarian cysts. We can give them Vat Kafar Chikitsa. Mainly Anuloman should be done with Vipattikar, Hingwashtak Churn, Iran Prishtaritaki, any which is available. Then Sukumar Kashay, Sahacharadi Kashay, Dashmul Kwat, Dashmul Devdaru Kwat, Varunadi Kwat. And in tablets, Sinath Gugul, Raspachak Yog, Gokshuradi Gugul, Chandraprabhavati. And Dhanvantram Bhatti, according to the patient, we can give them. And mainly Raspachak Yog or any medicine which is helping working on the Ras Dhatu, that really works well. So when we do Langhan Deepan Pachan, Ras Dhatu formation becomes normal, and we can feel the difference, whatever the attributes of Ras Dhatu are there. Especially the patient is with usually is irritable or of low self-esteem, and then indigestion is there. Then when after I have found that changes within a week or 10 days, that she is more open, and her skin texture also changes. So that difference. Then Rakta Prasadan Chikitsa, this we have to use in hemorrhagic cyst and in endometriomas. So here Raktpachak Yog, Keshor Guglu, Sut Shekhar Ras, Giloy Ghanvati, and Yashti Madhu, Sariva Khadir, then Sarivadi Asav, Trayantyadi Kashay, Mahatiktam Ghritam. These can be added. And there are so many medicines in Ayurveda, but we have to decide according to the condition of the patient. And when we give the medicine with the yukti, it works. Then Dushi Vishar Chikitsa, that we should start in the initial phase. So since Dushi Vish cannot be metabolized and only detoxified by Shaman by 6 Ras Pradhan Dravyas, so Dushi Vichari Golika, Bilvadi Golika, Gulgulutiktam Kashayam, Manjishtadi Kashayam, and Ghritas like Falghrit and this Mahatikt Ghrit, these can be added, and then Shofar Chikitsa, that is Punanavadi Guglu, Punanavadi Mandur, Dashmul Kwat, Trayantyadi Kashaya. These we can add in that. So we can consider the patient in the teenage, in the middle age,
and in the around post-menopausal and premenopausal phase. So when the young girl comes with menstrual disorder and with a report of follicular cyst or ovarian cyst, first we have to check for her the her lifestyle, her eating habits, and her hemoglobin. Okay, because most of the females are anemic, so we have to take care of that. And when you give this lifestyle modifications, their condition becomes normal. So we don't even when we know that this is a functional cyst or the follicular cyst, no medicine is required. Just give her 2 medicines, right? One for her HB and one for her general well-being, either Giloy Ganvati or Punarnavadi Mandoor or Navaya Slow. So something like that patient feels good that something is given to me, but her lifestyle will work wonders for her. So that is a very important aspect. And just educate them that what the menstrual cycle is like and what else she has to take care of. Then this cold drinks and whatever junk food, that has to be stopped. And when you counsel them properly, they follow, they stop taking these things. And then in the middle age group, that we have to take all the considerations, and as I have discussed earlier, and especially the dhatu part and the dosh part we have to take care of, and the prakriti of the patient. Nowadays prakriti parikshan is going on, so we can understand that in a better way. So that we have to take into consideration. And then in those age groups, we have to give target-oriented medication according to the cause and according to the report. And then there are this PCOS and endometrioma. PCOS, lifestyle is the main. And then here what I have found, or what I feel is that we have to work on the Med Dhatu in the PCOS females. So in PCOS, whether it is lean or obese, we have to add grit. Grit is a must because nobody is taking ghee and that snehan we need in the body. Okay, so when either you can give fal grit, you can give sukumaram grit, any grit according to the patient, just add that. And that helps in reducing the fat also and proper regulation of menstruation also. And then whatever medicines in PCOS also, we just cannot, every patient is a different patient. No one protocol you can follow. It's just according to the patient. Counseling is very important. And then her lifestyle, and then medicine according to, and we have to give it in the stage, in a phase manner. It's not just we are giving only one kind of medicines, because what I see is mostly they are giving Kanchanar Guglu, Varnadi Kashai, Raja Pravartini Vati. So these work in some patients, and in some patients they don't work, right? So we have to go by step. First, build her health. That first we have to remove the arm status of the body, and then the exercises mainly advise her yoga and deep breathing. And this is must. And even and just don't tell the patient to be very specific that you have to do exercise in the morning only or evening only and for half an hour or 1 hour. Nobody can do it. So just advise, just keep that gap after food, like 2 hours after food or 1 hour before food. Do it for 10 minutes. Start with very stretching exercises or asanas. And I tell my patients to just do walk for 5 minutes. Start with 5 minutes.
or even 3 minutes. You just walk in your home. You don't have to go outside your house or in any garden to do the walk. Just do walk, and that too brisk walking. Do it 2 or 3 times in a day, and then build up your stamina, and then you increase. Because when we tell them you just have to do it properly, that is not possible. She will do it for a week or 10 days, then she'll stop because that stamina is not there. So that will not work. So just give them those things which can be managed, which she can easily fit in her schedule. Okay. And then this pranayam and om chanting and Brahmari, that also is very good. And especially we have to counsel her that whenever she's feeling irritated or angry or any negative emotion, just chant any religious part, whatever she follows, or om. Just switch your mind. Okay, so because then that vicious cycle starts. You're in a low mood, then you are binge eating, then you're sleeping, and then you're gaining weight. So that we have to break that. And then in the endometriomas, since we have discussed what is the process going on, and so we have to, and we can consider it as a Raktaj Vidradhi mainly. Okay, and because pain is also there, and usually in Granthi, pain is not there exactly. So mostly we can consider it as this thing. And here we have to do Vatahar plus Raktapachak Chikitsa and the Shofar Chikitsa, because if you go, what are the contents of it? We need chelating agents also. So here Gandhak Rasayan, Keshor Guglu, Pitta Shamak Dravyas, they work better. But in endometrioma also, we get results, but in some patients, we don't get much results. So there Panchkarma should be added. Okay, and in Panchkarma, so Shodhan Chikitsa in women can be given, especially in PCOS cases, it works wonders. Then Virechan, if Virechan is not possible, then Nitya Virechan should be given, either with Avipattikar, Hingwashtak, or Iranbhra Sharitaki, whatever medicines you have with you. So Nitya Virechan is must. Then you can give Basti, Yog Basti, and Matra Basti. If Yog Basti is not possible, start with Matra Basti. Okay, because everybody is not having that setup to do these procedures. So Matra Basti can be given. Start with Vatahar, especially Secharadi or Dashmul Tel, or even simple Til Tel. So Matra Basti, it will take care of the Apanavayu. And since the GIT is the second brain, so it is affecting the hypothalamo-pituitary axis also. So that also helps Matravasti in every condition. So simple, you can, in simple ovarian cysts, we can give with even Til Tel. And then we can be very specific. If endometriosis or endometrioma is there, then Yashti Madhu Tel and those Pitta Shamak oils, we can give Chandan Balal, Chandan Adi Tel we can give. Then accordingly, we can plan or whatever oils are available in your area. This can be done. And then Nasya. This is very important. Proper Nasya, if can be given, that is, it has very good results. If not, then tell her to have Pratimarsh Nasya. Simple, start with mustard oil or til oil, and then you can add on other oils. Then Shadbindu Tel, that is very good for Shodhan. So it is also good. And then we can add Brihand oils like Kshirbala Tel and Dhanvant Kshirbala Tel and Mahanarayan Tel. Mahanarayan Tel
has very good results in ovulation and PCOD also. Then Yoni Pichu in married females, you can give Yoni Pichu. That local effect is very good. Here also we can use Dashmul, Dhanvantram, whatever is available according to the your place and the condition of the patient. And Nabhi Puran. This also helps. You can give that oil. Just tell her to put half spoon or 1 spoon, whatever is how much is required, in her navel, and tell her to rest for 20 minutes. That is one of the aspects that she takes rest. And then Nabhi Puran, she has to just lie down and let it be there for 15-20 minutes, and then just tell her to massage in the clockwise type and in her lower abdomen. It has also got very good results in an ovulation also. So there are some researches also. So this is there are so many research articles on the net. You can go through them. So I'm just putting up 2 cases. So one was in the Kurukshetra. It was done in Kurukshetra. Here, 35 years old female patient was came to Prasuti Tantra and Stree Rog OPD with main complaint was of pelvic pain and bloating in abdomen, changes in menstrual pattern, pain during sexual intercourse since 2-3 months. So her USG report was she was diagnosed with right ovarian complex cyst. Okay, so now I hope you can just make out what this means, right? Ovarian complex cyst, 36 mm into 36 mm into 34 mm. She took advice from allopathic hospital, took 1 month oral contraceptive pills, but she was not relieved of her symptoms. Then the treatment given was Varanadi Kashayam 20 ml twice a day, and Gulgulu Panchpalam, and that is 1 teaspoon with honey at early morning, and Dashmul Kwath 20 ml BD, and Ajmodadi Churn half teaspoon with warm water once a day. So after this completion of the treatment, the patient was satisfied with the result. Her ultrasound reports revealed no evidence of complex ovarian cyst along with symptoms. Her pain was also reduced and she was completely cured with Ayurvedic treatment. And there were no recurrence of symptoms and signs until now. Then this was another case study, Ayurvedic approach for management of ovarian cyst. This was done in Chaudhary Brahm Prakash. So an 18-year-old female, she came to the hospital on September 2018 with a complaint of pain in lower abdomen and epigastric region, along with burning micturition and constipation for about 6 months. On examination, the patient was found anxious with disturbed sleep, moderate appetite, constipation, and burning micturition. The tongue was coated, voice was vibrant, and roughness of the skin was present. So these all symptoms are of the vitiated Das Dhatu. Okay, so when we work on the Ras Dhatu, these symptoms disappear. The patient had Madhyam Sahar, Madhyam Sahanan, Sampraman, and Madhyam Satmya. And Madhyam Sattva, Madhyam Vyayam Shakti, Madhyam Ahar Shakti, and Madhyam Jaran Shakti. Vata and Kapha doshas were mainly affected in the patient. So her USG was, report showed cyst in the right ovary measuring 3.32 into 2.75 centimeter. Left ovary was normal in size, and the treatment given was, they had started with the local medicines, mainly Gokshuradi Guglu, Syrup Deolka, and Antaf. And then then Khadira Rest was added, and Gokshuradi Guglu continued, and Punanavadi Guglu was added. So then after that, Shankhavati was added,
and Khadirarest and Anta was continued. Then, so this is what I was telling, that you have to give the medicine in a phasic way, manner, whatever the status of the patient, and accordingly you can change the medicine. We don't have to give one medicine continuously. Like I have seen patients taking the medicine for 3 months, 4 months. So you have to give a gap. So this was the protocol. This was the medicines were given, and the patient and her cyst was resolved. So similarly, there are many cases. Published papers are there, and when you go through them, you will see that there are many case studies, and in every patient in case study, the medicines are different. Okay, so we have that benefit or the help that every our medicines, they have a multiple effect. It's not just target oriented or the organ oriented. So we can make our combinations according to the condition of the patient and the status of the disease. And yeah, then sleep is very important. Few points. That the use of phone, that has to be reduced, and especially during sleeping, nighttime. Then sleep, it releases melatonin that helps in the proper functioning of the ovum. And when that is not in the proper amount, and if melatonin is not there in the follicles also, that can lead to cancer also. So whatever dincharya has been mentioned by our acharyas, it has a scientific significance. So when we tell them to follow that, they recover normally. Like I just mentioned most of the time, one of my patients, she was doing internship. She was a mid-dental doctor, and she didn't have periods for 3 months. And I just told her to make lifestyle changes. What she was doing, she was getting up late. Then she had to rush to the hospital. She would take coffee and then take sandwich from the canteen or anything else. And then in the evening, she will go to the gym. And then I think sometimes she'll have home cooked food, sometimes from the outside. And she was staying alone for the internship. Then I told her, and she was like, I feel very drained. I feel very lethargy. Then I told her, just shift your time. You just go to sleep by maximum by 11 o'clock and get up 1 or 1.5 hours earlier. Then cook your food. Then she said, like, I don't have any problem cooking my food. So she started cooking her food, taking proper, I told her to add ghee in her food, proper vegetable and pulses. Like one meal should be proper, like dal, sabji, roti, everything should be there. And water intake was less, that she increased. And like it took her 1 month, but her menses started. And she said, now I feel energized and I can concentrate. And she was preparing for her graduate entrance tests also. So it's just a lift, whatever the problem may be. But when we take care of the lifestyle, that is the 50% of the treatment, जो स्वस्थ वृत्त कहा गया है. And then one more thing that should be added is like 5 minutes or 10 minutes of your rituals, or जो पाठ करना है, जो gratitude का भाव लाना है, that is very important. I just tell everyone that you should be grateful for each and everything. And studies have shown when we are grateful, our hormones are in a balanced state.
and we are in a good health status. So rest we can discuss, and I'm really sorry there was some glitch, so I could not present this rest of the slides. So we can discuss. If you have any queries, we can discuss. Thank you so much. Thank you, Professor Baljot Kaur ji. Thank you so much. It was a very nice presentation. And I request Professor Kamini Dhiman ji to please comment and remarks to the presentation of Professor Baljot Kaur. Yeah, thank you, Dr. Baljot. You have covered, I think, almost all the points regarding ovarian cyst. A lot many people might be having some of the doubts regarding this disease. A lot many questions might be there in mind of all the participants. I will invite some experts also to add on the topic. But first of all, I would like to add on something that Ayurved में जो बोला है असात्म इंद्रियार्थ संयोग, as per my observation, that nowadays इंद्रिया जो हमारी सारी इंद्रियां हैं, इनका जो यूज है वो असात्म इंद्रियार्थ संयोग बहुत बढ़ गया है। कि जैसे कि अभी एक आधा क्वेश्चन इसमें चैट बॉक्स में भी मैं देख रही हूँ कि फोन का यूज जो बहुत बच्चे कर रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम हैज बीन इंक्रीज। सो बहुत नजदीक का बहुत ज्यादा देर तक देखना वो भी असात्म इंद्रियार्थ संयोग है। दूर का कितना देखते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है घर से बाहर कितना निकलते हैं या कितना दूर हम देखते हैं, अगर ये हम कंपैरेटिव देखते हैं तो दूर का तो बहुत कम लोग देखते हैं, नजदीक का बहुत ज्यादा देखना शुरू हो गया। लाइक दैट ईयरफोन का यूज वो भी असात्म इंद्रियार्थ संयोग आ गया है। स्किन पे भी बहुत सारे केमिकल्स, क्या बोलते हैं, मॉइस्चराइजर्स, क्रीम, सनस्क्रीन, परफ्यूम्स, इन सब का यूज जो है दैट इज ऑल्सो असात्म इंद्रियार्थ संयोग। ये सारे मिलके तो फिर जो है कॉजेटिव फैक्टर्स जो है वो आजकल बन रहे हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट कैन बी द कॉजेटिव फैक्टर। और सेकंड थिंग कि ओवेरियन सिस्ट ऐसी चीज है कि आपको चाहे गांव का परिप्रेक्ष्य में पेशेंट आती, गांव से आती है, शहर से आती है, अनपढ़ पेशेंट है, पढ़ी लिखे पेशेंट है, व्हाटएवर द एज ग्रुप, हर एक पेशेंट में मिलती है। तो अगर हम इस पे सोचते हैं तो हाइपोथैलेमस इज द मेन कल्प्रिट इन दिस, कि हमारा जो माइंड, दिमाग जो है हर व्यक्ति का इतना ज्यादा कैलकुलेटिव है, इतना ज्यादा चलता है, उसको शांत ही नहीं कोई भी कर पाता है। कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस हर के माइंड में, चाहे जागते हैं चाहे सोते हैं, चल रही हैं। तो जो प्राणायाम का इफेक्ट इसीलिए मिलता है कि एक मन की शांति जो एक समय के लिए हर व्यक्ति को जरूरत है वो नहीं है। दूसरा, जो भूलना बोलते हैं ना कि कल का भूल जाओ, वो व्यक्ति, हर व्यक्ति रिमेम्बर, तो लॉट मेनी थिंग्स आर स्टोर्ड इन माइंड। तो उस वजह से भी पूरा एचपी एक्सिस जो है दैट इज डिस्टर्ब्ड, और ये भी मिलता है। तो स्वस्थ वृत्त का रोल बहुत ज्यादा रहता है इसमें। अगर हमारे पास पेशेंट्स आती है ओवेरियन सिस्ट की, तो जैसे आपने डिस्कस किया कि मेडिसिन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉजेटिव फैक्टर कि इसकी संप्राप्ति कैसे बन रही है। रस से लेके अस्थि तक की दृष्टि इसमें मिलती है। ऐसा है कि सिंपल सिस्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, इवन डर्मोइड सिस्ट जब होती है तो डर्मोइड सिस्ट तक अस्थि धातु की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो रस रक्त मांस में अस्थि तक ये सारा जो है इन्वॉल्वमेंट होता है इस व्याधि में। तो व्याधि को पहचानना है, धातु दृष्टि को पहचानना है, संप्राप्ति को पहचानना है, देन ओनली वी कैन डायग्नोस एंड वी कैन ट्रीट द पेशेंट। इतना इजी नहीं है ओवेरियन सिस्ट को ट्रीट करना, एंड अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत मुश्किल भी नहीं है इसको ट्रीट करना। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है इतने सालों की। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगी जो भी हमारे एक्सपर्ट से जुड़े हुए हैं, अगर कुछ अपना ऐड करना चाहे। अंजना मैडम, अगर आप बोलना चाहें तो मैं आपको चाहूंगी, बोलना चाहे क्या, मैं चाहूंगी कि आप अपना कुछ व्यू इसमें बोलें। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम। नमस्ते मैम। जी मैम, हाँ नमस्ते। नमस्ते। आप जी तो मैम। इसमें जरूर बोलिएगा, कुछ अपना व्यू इसमें दीजिए, है ना, आपको जी सुनने का हम सबको मन करता है, तो आप जरूर बोलिए थोड़ा सा। थैंक यू मैम।
एक्चुअली मैम आप लोग बहुत अच्छे से, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ। बलजोत सिंह मैडम को बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छे से मैडम ने सारी चीजें हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाई, बच्चों का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया, और हम लोग की भी नॉलेज बढ़ी। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये केसेस हम लोग को बहुत कॉमनली मिलते हैं, और ओपीडी में जब भी हम पेशेंट देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी ओपीडी में इस तरह के केसेस ना आए। ओवेरियन सिस्ट एक बहुत ही चैलेंजिंग केसेस हैं इस समय के लिए, और जनरली जो हमारी गर्ल्स हैं या जो अनमेरिड गर्ल्स हैं या जिनको थोड़ी लेट मैरिजेज होती है, उनमें मुझे को ज्यादा देखने को मिल जाता है। और सच बात यही है कि साइज पे ट्रीटमेंट जो है, साइज के साथ साथ जैसे अभी अब बात हुई, लाइफ स्टाइल पे भी बहुत ज्यादा हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मरीजों को तो कुछ पता ही नहीं होता है, वो केवल डिस्मेनोरिया लेके आते हैं या जैसे मेनोरेजिया लेके आते हैं, या समटाइम्स कुछ नहीं तो पेन इन एब्डोमेन लेके आते हैं, और समटाइम्स तो हम लोग यूएसजी कराते हैं तो एक्सीडेंटली भी मिल जाते हैं। तो मैडम ने बहुत अच्छे से बताया। जनरली हमारे यहाँ जो केसेस में अभी हमने इस पे जो वर्क किया है, इस पे आयुर्वेद में हम कोशिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तो आपने जैसे बताया कि हम जहाँ बात करते हैं सिस्ट की है, तो सिस्ट का मतलब ये, जैसे मैडम पढ़ा रही थी, मैं थोड़ा कम लेट ज्वाइन की, सॉरी मैम, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं आपकी फिर से सुनूंगी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग। तो मैं इसमें इसीलिए अपने मेरे को पता नहीं, आपने उसमें शुरू में जरूर बताया होगा, लेकिन मैं जो अपने हिसाब से पेशेंट को देती हूँ, तो हमारे यहाँ जनरली जो है वो सबसे पहले काम मैं वही करती हूँ कि थोड़ी गृहिणी दृष्टि को दूर करती हूँ, क्योंकि आहार रस और रस धातु पे कार्य करना बहुत जरूरी होता है। तो जब रस धातु अच्छे से बनने लगती है, और जो हमारी ग्रंथि है यहाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कुपित हुई है हमारे दोष, तो यहाँ कफ की प्रधानता भी है और पित्त भी कहीं ना कहीं यहाँ कुपित हुआ है, और वात तो क्योंकि योनि व्यापन में आएगा ही, तो वात है। तो मेरा जो जनरली रहता है, मैडम ने जैसे मुझे आदेश दिया एक तरह से, तो मैं जरूर पूरा करूंगी मैडम के आदेश को। तो मैं माइल्ड या नित्य विरेचन पे लेती हूँ अपने पेशेंट को, चाहे मैं आरगवत चूर्ण देती हूँ या फिर पंचतिक घृत के साथ देती हूँ, दाढ़ी मास्टक, बाल चतुर्वत, जो इस तरह से मेरी ओपीडीज में मिलता है। क्योंकि हम लोग के साथ थोड़ा सा है कि हम कॉलेज की ओपीडी के हिसाब से ही ट्रीटमेंट लिखते हैं, बाकी कुछ पेशेंट होते हैं जिनको हम बाहर से दे सकते हैं। उसके बाद इसमें मुझे जो इफेक्ट मिलता है वो गोक्षुरक्वाथ का, वरुण शिग्रुक्वाथ का, और मैंने बच्चों से स्पेशली शिगरू तेल बनवाने के लिए भी इसमें कई बार कहा है, और मुझे उसका इफेक्ट भी मिलता है ना। स्पेशली जो है, अगर हम मात्रा वस्ती देते हैं शिगरू तेल की या वरुण शिगरूक्वाथ की, या फिर जैसे मैंने कहा गोक्षुर की, गोक्षुर चूर्ण भी यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। और बाकी तो बहुत ड्रग्स में, जैसे आपने सारी ड्रग्स बताई दी है, लेकिन कॉमनली हम लोग यही यूज करते हैं, काचनार गुग्गुल है, शिगरू गुग्गुल बट्टी है। और इसके अलावा स्पेसिफिक मेडिसिन में अगर हम चाहेंगे तो थोड़ा नाभि पूरण पे भी हमने थोड़ा सा यहाँ कार्य किया है, क्योंकि उसका इफेक्ट मिलता है पेशेंट को। और मुझे ये लगता है कि पेशेंट उसके लिए, उस पे उन कोई सारी चीजें बताने से पेशेंट थोड़ी कंसंट्रेट करती है अपने रोग के ऊपर। क्योंकि स्टार्टिंग में जो पेशेंट आते हैं सिस्ट वगैरह में, अगर हम स्टार्टिंग पे ध्यान देते हैं तो साइज फिर हम उसको इंक्रीज नहीं होने देते हैं, साइज हम उसको फिर थोड़ा सा, अगर उसके वो अच्छे से काउंसलिंग हो जाती है तो वो समझ जाती है कि ये प्रॉब्लम है और इस पे हमें कंसंट्रेट होना है। तो लाइफ स्टाइल के साथ साथ अगर हम उसकी डाइट पे और उस जैसे नाभि पूरण के बारे में बता दिया, थोड़ा सा तल हृदय मर्म के बारे में उसको बताया कि आप लेटते समय आप इस शिगरू तेल ही ले लीजिएगा, शिगरू तेल को तल हृदय मर्म पे हल्के हाथ से मालिश कर लीजिएगा, थोड़ी देर जब तेल अच्छे से सूख जाए तब आप अच्छे से रजाई ओढ़ के लेटिएगा। तो इस तरह से चीजें बताने से उसका इफेक्ट भी मिलता है, और नस्य क्रिया भी कहीं ना कहीं इसमें इफेक्ट है। अब ये डिपेंड करता है कि प्रकृति क्या है, और उसके हिसाब से कहीं कहीं हम पंचशील घृत का भी नस्य दे सकते हैं, क्योंकि अगर ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है तो फिर वहां हम ये करते हैं, अगर हमें लगता है कि हमें मेन कार्य करना है तो कहीं हम इस पे जो है वो शतपुष्पा तेल का या फिर शिगरू तेल को भी थोड़ा सा कहते हैं ना, उसमें हम मिला देते हैं। जैसे मानिए हमने शिगरू तेल लिया, थोड़ा सा उसमें शतपुष्पा मिला दिया या शतावरी मिला दिया, तो इस तरह से कि पेशेंट को बहुत ज्यादा अनइजी ना हो और पेशेंट उसको ले पाए। या फिर कभी कभी हम, कुछ पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं तो फिर उसको वेपराइज कराते हैं कि आप पानी उबाल के उसमें थोड़ा सा दवा डाल के उसके अच्छे से वेपर वगैरह लीजिए, या फिर कभी कभी हैंकी वगैरह में लगा के भी उस तरह से हम उसको बताते हैं कि इसका आप जितना आप इसमें रेस्पिरेशन डीप लेंगी उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर ले जाते हैं, वस्ती मात्रा वस्ती कर ले जाते हैं और नाभि पूरण कर ले जाते हैं, हम नित्य विरेचन कर ले जाते हैं, तो कम से कम साइज पे तो हम लोग कमांड कर ले जाते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। कई केसेस ऐसे हैं जो बहुत ही पेशेंट मेंडोमेट्रियोमा या ये ओवेरियन सिस्ट लेके आए हैं, और वो आए थे वंध्यत्व के लिए, और हमने उसको एक्सीडेंटली चेक किया और ट्रीटमेंट किया और वो प्रेग्नेंट भी हुए।
तो ये प्रोटोकॉल मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया, ये मेरी ओपीडीज में चलता है, मेरे सारे रेजिडेंट ही करते हैं। लेकिन मैडम आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत चीजें आज नई नई पता चली। थैंक यू मैडम। थैंक यू कामनी मैडम, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं पीटीएसआर के लिए, बहुत अच्छा चल रहा है सब। बहुत खुशी होती है आपकी इस सीरीज में ज्वाइन करने के लिए। हम लोग ललायत रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जरूर जुड़े आप लोगों के साथ। थैंक यू मैम। Thank you, madam. Now I would like to invite Dr. Rama Devi, madam. Rama Devi, madam. रमा देवी मैडम मुझे लगता है कि चली गई है ना। यस। मैम कुछ क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, वो ले लें? जी जी जी, क्वेश्चन ले लीजिए तब तक, है ना। ठीक है। हाँ मैम, एक में पूछा है हाउ श्रीनाथ दुग्गल वर्क ऑन ओवेरियन सिस्ट। मैम आप उसके कंटेंट्स देखिए, उसमें त्रिफला है, उसमें गंधक है, उसमें एरंड तेल है ना। तो ये वात कफ पर काम करता है, तो वो अनुलोमन का भी काम करेगा, और वो वात और कफ और वहां पर जो संप्राप्ति बनी है ना उसका भी विघटन करेगा। और उसको हमको स्टार्टिंग में नहीं देना है, आप पहले दीपन पाचन से स्टार्ट करके फिर आप उसको किसी भी स्टेज में सीना गूगल ऐड कर सकते हैं। ये आप हेमोरेजिक सिस्ट या एंडोमेट्रियम में नहीं करेंगे, जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट है। और उसमें इसका अच्छा काम होता है। Then as I see many patients of 11th and 12th class students with PCOS, they don't have time for more exercise, phone and computer time more. मैम वी डोंट नीड एक्स्ट्रा टाइम, उनका जो भी रूटीन है उसी में ही वी हैव टू इंसर्ट दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अब अगर उनको आप बोलिए कि आपको कंटिन्यूसली आप बैठे हैं तो आप 5 मिनट के लिए खड़े होके पढ़ लीजिए या थोड़ा सा चल के पढ़ लीजिए जो आपने रिमेम्बर करना है। तो इसी तरह से आपको उनके रूटीन में ऐड करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं आएगा। एंड देन जो पीसीओएस है मैम, उसमें बहुत मेडिसिन जो स्पेशली ये वाले इस एज ग्रुप के जो गर्ल्स हैं उसमें मेडिसिन मैम कम देनी है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज्यादा कराना है, क्योंकि हम मेडिसिन पे स्टार्ट होते हैं ना तो वो फिर वो थोड़ी सी डिपेंडेंसी हो जाती है, उस चीज को थोड़ा अवॉइड करना है। उनका आप देखिएगा उनका जो ईटिंग हैबिट्स है ना वो सही नहीं होंगी इस एज ग्रुप के बच्चों में, फिर वो स्ट्रेस इंड्यूस मंचिंग आ जाती है तो वो कुछ भी खाएंगे। तो आप उनको वो एडवाइस कीजिए कि आप, क्योंकि वो अभी आदत भी नहीं होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा भी सैलड्स है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपके साथ रखिए कि भी वो बिंज ईटिंग नहीं करनी है। तो वो और पानी कम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं तो वो एक जो शुगर का स्पाइक है वो बहुत जल्दी आता है, तो उसमें वो एंग्जाइटी भी उन लोगों को ज्यादा होती है। तो ये चीजों में आप इनको समझाएंगे तो बच्चे समझते हैं एंड दे फॉलो, वो चीज करनी पड़ेगी। वंदना मैम थैंक यू सो मच। एक ने बोला है they know everything but no time do, how should we proceed in them? They are on OC pills, otherwise periods scanty and irregular also. Ma'am, again, it's just that they have to take care of their lifestyle. और वो ओसी पिल पर भी हैं तो जस्ट टेल देम टू स्टॉप इट एंड जस्ट टेल देम कि आप 1 महीना अपने आप को दो। उसमें इट्स दे विल नॉट गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स कि आपने ओसी पिल्स बंद की हैं एंड यू स्टार्टेड विद द आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड यू विल गेट द रिजल्ट, वो नहीं आएगा। वो आप उसको काउंसिल करिए कि इट विल टेक सम टाइम। आप जैसे आप उनको वो थोड़ा सा उनका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट आएगा लाइफस्टाइल चेंज के बाद कि भी आप एनर्जेटिक फील करोगे, आप रिलैक्स फील करोगे, आप काम ज्यादा कर पाओगे, वट एवर वर्क चाहे घर का या ऑफिस का। एंड एंड देन जब ये चीजें स्टार्ट करते हैं ना, और जो अभी हम बोलते हैं भी ओबेसिटी है ना, फैट एक्यूमुलेशन है, उसमें एक एस्पेक्ट जो है वो इन्फ्लामेटरी एस्पेक्ट भी है उसमें, it is due to inflammation also. So when we stop all these things and add proper diet, proper sleep, that inflammation reduces, and they reduce weight also. Like weight में mainly उनका जो इंच लॉस होता है ना वो ज्यादा होता है। आप वो भी समझाना है पेशेंट को कि दो तरह से है, एक इंच लॉस है और एक वेट लॉस है। वेट लॉस आपको नहीं दिखेगा
बट इंच लॉस में आप उनको, वो भी अगर उनको नहीं समझ में आएगा ना, तो आप उन, मतलब इट्स लाइक दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, लाइक वो आपको समझाना पड़ता है पेशेंट को कि आपको कपड़े अभी कंफर्टेबल हो गए हैं, थोड़े लूज हो गए हैं, दैट वे। तो आप उनको वो उनके लेवल पे जा करके समझाते हैं, तो दे अंडरस्टैंड एंड दे फॉलो। लाइफस्टाइल शुड बी करेक्टेड सो एज टू, यस मैम, फ्यूचर जनरेशंस को सेव करना है, क्योंकि अभी हम वो देखते ही हैं फीटल ओरिजिन एफओआईडी और फीटल ओरिजिन मिडिल एज की जो डिजीजेस आ रही हैं दैट आर बेसिकली ऑफ द फीटल ओरिजिन, तो दैट वी हैव टू टेक केयर। एंड मैम जो दूषी विषारी अगद है, दैट वी कैन स्टार्ट विद द व्हेन यू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट, आप उसमें वो चीज ऐड कर सकते हो। और घी जो है, जो जिसका थोड़ा सा पित्त शामक और जो थोड़ा सा शोधनार्थ है, आप उसमें जैसे महातिक घृत है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल प्लेन घृत से भी स्टार्ट कीजिए, है ना। उसमें भी अभी ऐसा होता है ना पेशेंट का, वो भी मतलब आपको उस लेवल तक जाना पड़ता है पेशेंट के, कि आप ये बोलिए, पेशेंट बोलेगा घी नहीं मुझसे खा होता है, आप उसको बोलिए भी आप जिस भी फॉर्म में खाओ। और अब अगर थोड़ा सा स्ट्रेस देके बोलेंगे ना कि घी तो खाना ही है, तो दे विल ईट, वो लेंगे घी। आप उनको बोलो आधे चम्मच से शुरू करो, चाहे खाने में मिक्स करके खाओ, चाहे जैसे भी खाओ, आपने खाना है, तो वो खाते हैं। एंड सो दूषी विषारी अगद जो है, आप अकॉर्डिंगली आप ऐड कर सकते हो व्हेन यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। थैंक यू डॉक्टर अर्चना, थैंक यू डॉक्टर किरण। Excuse me, ma'am. Dushi Vishari, ma'am, agar can be started during the period of arm pachan. यस Do मैम, you mean that? है ना मैम? कर सकते हैं मैम, क्योंकि वो भी एक कॉज है ना, तो उसलिए हम उसको कर सकते हैं। पर घी जो है उसको हम थोड़ा सा, जब थोड़ा लंघन पाचन हो, अगर घी के जी फॉर्म में जी देना है तो थोड़ा लंघन पाचन करवा के 1 हफ्ता 10 दिन के बाद में फिर आप घी स्टार्ट करिए, तो उसके बेटर रिजल्ट्स आते हैं। Today, one patient came to us with 9 centimeter simple cyst with not any history, even not complaint, accidentally diagnosis. What should we advise? तो 9 सेंटीमीटर है, वो थोड़ी बड़ी है सिस्ट, एंड उसको थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा कि उसमें टॉर्जन के चांसेस ना हो या उसको पेन ना हो, वो आप ध्यान रखिएगा। एंड आप उनको ये वही दीपन पाचन से स्टार्ट करके उनको आप चाहे कांचन और गुलगुल है, वरुण चिगरूक्वाथ है, आप कुछ भी उसको जैसे एम्टूटोन या एमिकॉर्डियल, कुछ भी यूट्राइन टॉनिक है वो आप उनको दे सकते हो। एंड नित्य विरेचन करवाइए, और उनको 9 सेंटीमीटर है तो उसमें आप ना उनको चाहे आप एज कितना है पेशेंट का आई डोंट नो, बट अगर वो फैमिली कंप्लीट हो गई है तो आप जैसे नित्यानंद रस भी ऐड कर सकते हो उसमें। एंड और बाकी सर आपके वहाँ पे जो भी अवेलेबल है आप उस तरह से उसको दे सकते हैं, पर आप उनको मॉनिटर आपको रेगुलर करना पड़ेगा। नित्य विरेचन आप जरूर दीजिए मैम सर, उससे उसको रिलीफ आएगा। What approaches should we adopt to treat a TO abscess? मैम एब्सेस के लिए अभी मैंने नहीं ट्रीट किया है, सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट मच, बट आई सी अगर जैसे एब्सेस है, विद्रधि है, तो वहां पर आपको जो तिक्त रस है और जो वहां पर हेलो नमस्ते मैम। उसका रहेगा, आप वो कर सकते हैं। और विद्रधि का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना, वो आप उसमें यूज करिए। और इसमें उसमें इसका सप्तसारम कषायम का रोल भी अच्छा है। और इसी तरह से आप जो दीपन पाचन वाला जो जो भी द्रव्य है, कॉम्बिनेशन जो भी रहेगा मेडिसिन में, आप वो उनको दे सकते हैं। और इसमें आप बस्ती जरूर दीजिएगा। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। वो 23 इयर्स ओल्ड है पेशेंट, अभी जो 9 सेंटीमीटर वाली सिस्ट की मैं बात कर रहा था। सर मैरिड है? नहीं नहीं, अनमेरिड है। और अनमैरिड उसको है नहीं तो थी, वो सर तो आप
उसको कोई लीवर प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से सोनोग्राफी की तो उसमें डायग्नोस हुआ है, जी जॉन्डिस हो गया था उसको। ओके ओके सर, ये एक ना ये फैक्टर भी रहता है, क्योंकि जब अब अगर हम मॉडर्न में थोड़ा देखें ना, तो ईस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म जो है वो उसमें लिवर भी होता है। तो जी हम इसीलिए कुछ पेशेंट्स में आरोग्यवर्धनी भी ऐड करते हैं। आप उस तरह से भी उसको ये चीजें भी आप ऐड कर सकते हो। जी जी ओके। तो मॉनिटर करिएगा और उसको थोड़ा सा समझा देना कि थोड़ा भी पेन होगा तो तुरंत हाँ वो जाएगी, बोल वेट दिया नहीं उनको। करेगी। हाँ बोल दिया। जी सर। ओके थैंक यू। सर ने पूछा, मैम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर पेल्विक किडनी एंड हाउ मच इफेक्ट ऑफ इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर इसका मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया है। मैम आप इस पे कुछ आप बताएंगे। I think this topic is away from our current topic. अच्छा, That topic can be taken on any other day, ओके सर। because when the session is open, but learned persons are there to put any question. But I think that the relevant questions has been well answered by you, and of course the learned audience also put very important questions which has been dealt with your presence of mind, and also the first question which was put forward, that what may be the line of the mode of action of Singanath Gogulu itself. It is a question even challenging to the professor when because it's difficult to go for the line of action of Ayurvedic medicines. Of course, they are there. So I think I would like to invite Professor Ramvi Sharma sir, if he is definitely like to add on something, because the questions are over, and Madam Kamini ji is with us. So if any query will be there or any add-on will be there, that can be taken, and that will be entertained. So I think I'll invite Dr. Professor Ramveer Singh, please. Namaskar. नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा सेशन रहा। मैम को मैं बधाई देता हूँ। बड़ी फिर वही बात आ जाती है, हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत को थोड़ा सा इधर उधर भटकते हैं तो मजा नहीं आता। आयुर्वेदिक सिद्धांत के ऊपर चलते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। जी सर। अपने जो सिद्धांत हैं, आपने दो तरह की बातें बताई। अपने जैसे सिस्ट की बात कर रहे हैं, तो सिस्ट के लिए निश्चित ही अपने को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा कि क्या सिम्टम है और किस दोष की वजह से हो रहे हैं, क्या दोष है, कौन सा स्रोतस है, उसको अपने अपने भाषा में ढालना पड़ेगा, तब ट्रीटमेंट होगा। तो हमारे जो सिद्धांत बताए गए, आपने दो तरह की बताई। एक तो बताई अपने पैथोलॉजिकल नॉन फंक्शनल, और एक बताई फंक्शनल। आपने यानी जो है, जो बताई गई है मॉडर्न साइंस के अंदर, तो एक्चुअली फंक्शनल जो है उनका ट्रीटमेंट अलग रहेगा और अपने नॉन फंक्शनल उनका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। जैसे मतलब अपने अपने देखा था कि अपने सिस्टेडिनोमा है, और सिस्टेडिनोमा के साथ में या फिर हीमोरेजिक सिस्ट है, तो सिस्टेडिनोमा है। इसी तरह डर्मोइड सिस्ट है, तो डर्मोइड सिस्ट तो अपने उसमें फीटल टाइम में डेवलपमेंट हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट अपनी मेडिसिन से नहीं हो सकता, वो कंजेनिटल हो गई, जेनेटिक हो गई, इसलिए तो उसके अंदर ट्रीटमेंट अपनों को मेडिसिन नहीं लेकर सर्जरी करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो अपने पैथोलॉजिकल सिस्ट्स हैं उनके अंदर अपने रिजल्ट जो हैं वो थोड़े से कम मिलेंगे। आचार कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य कहता है। मैं आचार्य के अलावा कहीं चलता ही नहीं, बात ही नहीं करता। दूसरी चीज है, जो अपने फंक्शनल हैं उनमें निश्चित ही रिजल्ट मिलेगा, चाहे अपने उससे स्वास्थ्य के अनुसार मिले, चाहे मेडिसिन के अनुसार मिले, अलग अलग मेडिसिन। आचार्य क्या कहता है हमारा, तो जहाँ अपनी ग्रंथि की बात आती है, तो ग्रंथि में एक चिकित्सा उन्होंने बताई कि जो ग्रंथि है, अगर उस ग्रंथि को शोफवत चिकित्सा बताइए। और शोफ की चिकित्सा आचार्य क्या कहता है, सुश्रुत की बात कर रहे हैं। ग्रंथि में अर्बुद में सुश्रुत फर्स्ट लेंगे हम, तो सुश्रुत उसमें कहते हैं कि उसमें उन्होंने कहा है कि विलेयम, उसको विलयन करना चाहिए। अब पुराने समय में क्या करते थे हम लोग, जिन इस तरह से गाँव के अंदर मसाज किया करती थी महिलाएं, तो मेरा ऐसा मानना है, अपने हम लोग एक तो सबसे पहले अपनी बात पे आते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं गलत तरीके से चल गया। डायग्नोसिस का सबसे पहले डायग्नोसिस का जो होता, आपने बताया कि डायग्नोसिस तो सडनली होता, अभी डॉक्टर साहब ने बताया सडनली डायरेक्ट से होता, पता ही नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे संचय ही हो रहा है दोषों का, मगर निश्चित ही उसके अंदर लक्षण मिलना शुरू हुए।
अब जैसे अपने फंक्शनल है तो फंक्शनल में जैसे ही फंक्शनल होगी, चाहे वो अपने फॉलिकुलर सिस्ट हो चाहे अपने वो लुटियल हो, तो उसमें अपने मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर शुरू हो जाएंगे। निश्चित ही यही नहीं कहीं मेंस्ट्रुअल के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो पेशेंट अपने मेंस्ट्रुअल लेके आए। अगर उसके फंक्शनल नहीं पैथोलॉजिकल है तो पैथोलॉजिकल में भी कोई ना कोई सिम्टम आएगा, मगर हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं या पेशेंट निगलेक्ट कर देता है। मान लीजिए कोई हाई डिस्चार्ज का पेशेंट आया और दवाई लिख दी, नहीं, सबसे पहले एग्जाम हिस्ट्री पूरी पेशेंट की लेंगे, डायग्नोसिस निश्चित होगा। 30% डायग्नोसिस हिस्ट्री से हो जाएगा, 30% से मोर देन 30% अपने पीवी करेंगे। अब पीवी क्या करना है, अपने सिर्फ यूट्रस नहीं देखना है, सिर्फ सर्विक्स को नहीं देखना है, अपने लेटरल फॉर्निक्स के अंदर जो ओवरियन फोसा है उसके अंदर देखेंगे तो ओवरी बढ़ी हुई, अपने जैसे ही ओवरी 3 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ेगी ओवरी, अपने को फंक्शन पता चल जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट राइट अपने इंगुलर रीजन में देखेंगे तो वहां पर भी अपने को साइज बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर की हो गई, 5 सेंटीमीटर की हो गई, जैसे ही सिस्ट बढ़ेगी ओवरी की साइज बढ़ेगी, तो अपने को पाल्पेशन से भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे यहीं पे जस्ट इसके पास में ट्रीटमेंट, जब अपने उत्तर बस्ती देते हैं तो उत्तर बस्ती में स्नेह स्वेदन पूरे शरीर का नहीं कहा है आचार्य ने। जब उत्तर बस्ती दे रहे हैं तो पेल्विक रीजन का स्नेह स्वेदन कहा गया है, और स्वेदन के साथ में जो आचार्य कहता है, सुश्रुत कहता है, उसमें विलयन करना है। तो विलयन अगर पीवी करते समय ओवरी को, अगर फंक्शनल ओवरी के अंदर फंक्शनल सिस्ट है, अगर पीवी करते समय उसकी मसाज भी करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से। तो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस। अब उसके बाद में आपने बहुत अच्छी बताई कि डायग्नोसिस कैसे करें, तो उसमें अपने जो बनाया अपने RMI बताई, रिस्क फैक्टर्स इंडेक्स, और तो उसके आधार पे भी अपने कर सकते हैं, CA के आधार पे करते हैं, CA 125 के अनुसार आधार कर सकते हैं, अपने USC के आधार पे कर सकते हैं, सिम्टम के आधार पे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इनके अंदर अच्छी तरह से डायग्नोसिस करें। हाँ, डायग्नोसिस करने के बाद में टाइप ऑफ ओवरी कौन सा है उसके अनुसार ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब आचार्य क्या कहता है, आचार्य हमारा कहता है कि शोभवत चिकित्सा करें, शोभवत क्रिया, यथास्तम शोभवत क्रिया। अब शोभवत क्रिया में आपने बहुत अच्छी बात बताई, गुग्गुलू के सारे योग हैं, जितने भी एंटी स्वेलिंग मेडिसिन है, बात सामक है चिकित्सा, सब एंटी इंफ्लेमेटरी एंडाल्जेंस होती हैं, उनका प्रयोग करें। तो उसमें एक चीज कहते हैं आचार्य, बृहति चित्रक व्याधि कणा सिद्धेन सर्पिता, विशेषता ये ग्रंथि के लिए लिखा गया। ग्रंथि के अगर आपने बताया तिक्त ग्रंथ, निश्चित ही तिक्त ग्रंथ बहुत अच्छा है, मगर तिक्त ग्रंथ के श्वेतर भी है तिक्त ग्रंथ और ब्रणशोधक भी है तिक्त ग्रंथ। तो यहाँ पर अपने बृहति चित्रक व्याधि कणा सिद्धेन सर्पिता इसका प्रयोग किया है। और एक अभी बात आई कि अपने टीवो ओवरियन एब्सिस की, तो आंतर वृद्धि के अंदर आचार्य आपने रक्त वृद्धि की चिकित्सा बताई, हीमोरेजिक सिस्टम में निश्चित ही रिजल्ट मिलेगा, उसको पक्का रिजल्ट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आचार्य कहता है उसको, हम आचार्य के अलावा चल ही नहीं सकते। आचार्य क्या कहता है, पीओ ओवरियन सिस्ट के अंदर, टीवी ओवरियन सिस्ट के अंदर, उसमें अपने जहाँ पे भी एब्सिस हो रहा है या स्वेलिंग हो रही हो वहां पे सिग्रू, अपने सिग्रू है, सहजन है, सहजन के उसके क्या नाम है, जो वल्क है, वार्क है, सहजन की सहजन वार्क को लेके उसको पाथ का प्रयोग किया गया है अंतर्विद्युति में भी। और फिर आचार्य बड़ी जबरदस्त बात करता है, आचार्य कहता है कुशलई समन्ता भवेत अभिच्छय शरीर देशान, ये शरीर कौन सी जगह पे है अर्बुद, कौन सी जगह पे शिष्ट है, उसको वीक्षण करिए, शरीर में कौन से देश में है, उसके आधार पर इसकी ट्रीटमेंट की होगी। उसके बाद वो आचार्य कहता है कि समीक्षा क्या करनी है, उसकी साइज क्या है, 2 सेंटीमीटर की है। मैं जानता हूं अगर ओवरियन सिस्ट, फंक्शनल सिस्ट अगर 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर की हो रही है, अभी जस्ट बात आपने की, साइज ज्यादा बढ़ जाएगी तो ही टॉर्जन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 2 सेंटीमीटर की सिस्ट है तो टॉर्जन नहीं होगा। तो सिस्ट के आधार पर, साइज के आधार पर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो वहां पे आचार्य कहता है कि इसकी अवीक्षण करना चाहिए कि क्या साइज है, क्या ट्रीटमेंट है, कौन से देश में है। फिर और जबरदस्त बात करता है आचार्य, आचार्य कहते हैं कि उसमें जो चिकित्सा करनी है वहां पे क्षार चिकित्सा करनी है, लेखन चिकित्सा, क्षारेण अब प्रतिसार्ये तु संलिप्य। तो उसके अंदर कैसा चिकित्सा करनी है, लेखन चिकित्सा करनी है और क्षार का प्रयोग करें। कोई भी ग्रंथि हो, कोई भी किसी तरह की ग्रंथि हो, उसमें क्षार का और लेखन का प्रयोग करें। अगर अब आप ये फंक्शनल की ट्रीटमेंट हो गई, नॉन फंक्शनल की ट्रीटमेंट क्या है, तो आचार्य फिर कहता है वहां पर सिद्धांत वहीं क्या कहता है आचार्य, वहां कहता है ग्रंथि अर्बुद आदि सदा छेद शब्द पूजिता। ग्रंथि और अर्बुद अगर अपने ट्रीटमेंट में मेडिसिन से नहीं आ रहे हैं तो सदैव उनको छेदन ही करना है उनकी। और छेदन कैसे करना है, विपाट्य चोधृत्य सकोश शास्त्रेण दग्ध्वा भ्रणवत चिकित्सित।
पूरा मूड ही निकालना। आपने जैसे अपने बताया ना, जैसे कार्सिनोमा में परिवर्तित हो जाता है। कार्सिनोमा में कौन से परिवर्तित होते हैं? फंक्शनल नहीं होते, मोस्टली फंक्शनल कार्सिनोमा में परिवर्तित नहीं होते। नॉन फंक्शनल कार्सिनोमा संभावना बन जाती है। तो नॉन फंक्शनल की चिकित्सा क्या है? चिकित्सा मेडिसिन की चिकित्सा नहीं, तो आचार्य ने सिद्धांत बता दिया, उसको उद्गत करना है, निकालना है। और निकालने के बाद चिकित्सा क्या करनी है? अशेष दोषवत, उसके अंदर दोष नहीं रहना चाहिए। अगर जरा भी कार्सिनोम वो कैप्सूल भी रहेगा तो कार्सिनोम परिवर्तित हो जाएगा। एक बड़ी अच्छी बात बताई आपने, डायग्नोसिस करते हैं, हम पीवी कर रहे हैं। पीवी करते समय अगर शेप रेगुलर है, अगर राउंड है, अपने निश्चित ही पता चलता है राउंड है, रेगुलर है, इरेगुलर है, साइज क्या है, वो पीवी करते से पता चल जाता है। अगर इरेगुलर है और अगर वो फिक्स है, मूव नहीं कर रही है, तो निश्चित ही वो कार्सिनोम अपने मैलिग्नेंसी की तरफ जा रही है। अगर पीवी करते समय ओवरी को ओवरियन से उसमें फोसा में अगर पीवी कर रहे हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, लेफ्ट फॉर्निक्स में, तो उसके अंदर इरेगुलर नहीं होकर रेगुलर है, गोल है, बड़ी साइज कितनी भी बड़ी हो, मूवेबल है, तो निश्चित ही वो मैलिग्नेंसी नहीं है, वो बेनाइन के अंदर जाएगी। तो आचार्य कहता है इनकी समीक्षा कीजिए। समीक्षा करने के बाद में उसकी किस तरह की है, फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, टिश्यू के अंदर ग्रोथ हो रही है, सिम्टम्स कितने हैं, उसकी समीक्षा करने के बाद ट्रीटमेंट करेंगे। आचार्य ने इतनी अच्छी चीजें कही हैं कि किस जगह क्या चिकित्सा करनी है। और निश्चित ही मेडिसिन पेशेंट टू पेशेंट वेराई करेगी। पेशेंट टू पेशेंट वेराई क्या करेगी? जैसे अपने किसी में विरेचन भी काम करता है, तो या भी क्रिया भी जाए शरीर रात बस समा, तो कहीं जरूरी नहीं है विरेचन ही काम कर जाए। अब बस्ती देते हैं, जब भी बस्ती उत्तर बस्ती देते हैं, तो बस्ती किस तरह की देंगे वहां पर उत्तर बस्ती? तो उत्तर बस्ती के अंदर भी अपने वेजाइनल उत्तर बस्ती देनी है, यूट्राइन बस्ती देनी है, सर्वाइकल देनी है, कौन सी देनी है? तो वहां पर जो बस्ती देते हैं, तो निश्चित ही अपने जो बस्ती देती है फॉलिकल अपने जाते फॉर्निक्स में जाती है बस्ती। बस्ती जाने के बाद में, फॉर्निक्स में जाने के बाद, उसमें बस्ती अगर बात है और कफ है, तो बस्ती कैसी देनी है? कोष्ण बस्ती देनी है। कोष्ण बस्ती वासोडायलेशन करेगी, वहां पे पेल्विक रीजन के अंदर जो वेसल्स है उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और उसकी वजह से उसके अंदर रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। तो आचार्य इतनी जबरदस्त चीजें कह गया, साइंटिफिक से देखा जाए तो हम उनको फॉलो करें, उनको सोचें, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ, पुराने जमाने में हम जो मसाज करते थे, बीवी करके महिलाएं कुछ मसाज किया करती थी आर्तव दोषों के अंदर, तो वो यूट्रस के अंदर भी मसाज करती थी, ओवरी की तरफ पूरी पीएल करती थी, उसका भी रिजल्ट मिलता था। और ये अपने उत्तर बस्ती देने से पहले अपने को मसाज करते, इसलिए आचार्य ने कहा स्नेह शोधन करके बाद तो उत्तर बस्ती दें, तो निश्चित ही रिजल्ट मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों ने मुझे, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, निश्चित ही सारी चीजें आपने एस्पेक्ट ले लिए, पूरे एस्पेक्ट जो उसके ग्रंथि के हो सकते हैं, ओवरियन सिस्ट के हो सकते हैं, सारे ले लिए। और यहाँ तक कि अपने मैलिग्नेंस कहाँ हो सकता है, कार्सिनोमा कहाँ हो सकता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, आचार्य ने इतनी चीजें कही है। आचार्य सुश्रुत ने चरकने में नमन करता है, उनके अलावा तो हम कहीं चल नहीं सकते, और सिद्धांत को पूर्ण पालन करेंगे। हाँ, एक चीज और होनी चाहिए, अपनी जो पानी क्षार है उसका हम लोग प्रयोग नहीं करते। मैं चाहता हूं कि इस पानी क्षार को बना के अगर इन चीजों के अंदर जो श्लेष्मा और बात के रोग होंगे उनके अंदर चिकित्सा की जाए तो रिजल्ट मिले। मैं अपामार्ग क्षार देता हूँ, तो अपामार्ग क्षार की जगह अगर मैं बना नहीं पाता हूँ, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, कंसल्टिंग ही करता हूँ, दवाई देता नहीं हूँ, तो अगर अपामार्ग क्षार की जगह पे विभिन्न प्रकार के हम लोग क्षार देते हैं, उनकी जगह पे अगर पानी क्षार का प्रयोग किया जाए, तो इंस्टीट्यूट में वो उनको करें, तो निश्चित ही उसके अंदर रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So now we can conclude session or we can take up some views. Okay, no doubt it was a wonderful session, and especially I would like to extend our thanks to Dr. Professor Baljit Kaurji. She very intelligently, very nicely presented and covered all the sectors related to the topic. Otherwise, the questions are still coming regarding the dysmenorrhea and etc. etc. But one more thing, that as she appreciated the observance of lifestyle, especially the Sastravat Dinicharya, that's very, very important. That's we are lacking, and especially the new generation. As she, there was a question that there is a lack of time. So this is not a lack of time. It is a lack of importance which is not been given by these students, irrespective of their busy schedule. Especially the 2020 program is very, very important for the relaxation of eyes also. If they are working too much, this mobile and tablet or this laptop or even the TV. So in that way, the time can be managed for this thing. And moreover,
the use of Uttarvasti also as per the patient's need and as per the indications for the particular disease or disorder is important. So goes the case with the detoxification of the patient, because especially the unmarried girls are to be taught to be given such type of instruction that these are the body's functional importance which is to be observed, because they have to become the mother in coming future. So the body is given by the God and it should be well maintained as a temple by yourself. This is very important. Otherwise, lacking of this thing will lead to the so many disorders, and then they've got no other option to visit repeatedly the so many physicians and gynecologists. With these words, I again appreciate Madam Professor Baldeep Kaur's presentation, and also Professor Pamni Nimanji's such good direction that they are always giving a good speakers, orators, and thinkers, and full of knowledge. Of course, Professor Ramveer Singh Sharmaji's contribution is still equally appreciable. And those who are the learned audience, they put questions. I also appreciate and I thank them because of their question that this discussion led to some very important end. And I thank to Professor Kamini Dimanji. I also thank all the guest speakers, the viewers, the listeners, the YouTubers, and all of us, all our pillars of our IRES AYUSH SAMRIDDHI platform coordinators. I thank all. And with these words, I again appreciating your efforts, and we do hope that on every Thursday and Saturday, your contribution in the same manner will continue with us. Thank you so much. Thank you. Thanks all in all, everybody. And I think Professor Panshumanji has given the responsibility to close it up. So thank you so much and good night. Namaskar. Shubhrat. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.